बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Omar Baig, कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we are going to install Oracle FX 21.1 and ORDS 21.4 with database 18C in Windows 10 InshaAllah. Quickly, आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle FX 21.1 और ORDS 21.4 को database 18C के साथ Windows 10 में इंस्टॉल किया जाता है जल्दी से। First we will create folder in C drive with the name 18C underscore 21.1। सबसे पहले हम C drive के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे 18C underscore 21.1 के नाम का, और इस फोल्डर के अंदर मजीद दो फोल्डर बनाएंगे DB और ORDS के नाम के। And under this folder we further create two folder with the name DB and ORDS respectively। Extract database 18C in DB folder which we have just created। अब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे Oracle database 18C को DB के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है। Extract ORDS 21.1 folder in ORDS folder which we have just created, so we do not need to copy and paste ORDS folder। अब हम ORDS 21.4 के फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे ORDS के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है, तो हमें ORDS के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा। The downloadable link of ORDS 21.4 is available, however we have already downloadable link ORDS 21.4 का मौजूद है, अलबत्ता हमने उसको पहले ही डाउनलोड कर लिया है। Extract Apex 21.1 in 18C underscore 21.1 folder, so we do not need to copy and paste Apex folder। अब हम Apex 21.1 के फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे 18C underscore 21.1 के फोल्डर के अंदर, तो हमें Apex के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा। The Java version which we are using is Java 8 update 211। जो जावा का वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो Java 8 अपडेट 211 है। Run database setup with administrator rights। database का सेटअप चलाएंगे राइट से। Option will be create and configure a single instance database, hit next button। ऑप्शन क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस का रहेगा, नेक्स्ट का बटन दबाएं। ऑप्शन विल बी डेस्कटॉप क्लास, हिट नेक्स्ट बटन। ऑप्शन डेस्कटॉप क्लास रहेगा, नेक्स्ट का बटन दबाएं। ऑप्शन विल बी यूज विंडोज बिल्ट इन अकाउंट, यू कैन यूज अदर ऑप्शन एज वेल, हिट नेक्स्ट बटन। यूज विंडोज बिल्ट इन अकाउंट का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, आप कोई दूसरा ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नेक्स्ट का बटन दबाएं। Assign global database name, password, confirm password from your choice, uncheck create as container database option and hit next button। global database name देंगे, पासवर्ड देंगे, confirm पासवर्ड देंगे अपनी मर्जी से, और create as container database के ऑप्शन को अनचेक करेंगे और next का बटन दबाएंगे। Now we will hit install बटन। अब हम install का बटन दबाएंगे। Oracle database 18C has installed at close button। Oracle database 18C जो है वो इंस्टॉल हो चुका है।
क्लोज का बटन दबा दें। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड रीच वेयर एपेक्स फोल्डर इज अवेलेबल। कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, वहां जाएंगे जहां एपेक्स का फोल्डर मौजूद है और वहां जाने के बाद ये कमांड चलाएंगे। व्हेन वी रीच देयर रन दिस कमांड। कनेक्ट विद सिस SSDVA, कनेक्ट होंगे सिस SSDVA से और चेक करेंगे SG मैक्सिमम साइज शो पैरामीटर SG की कमांड चला के। अगर वो 3000 MB से कम होगा तो हम उसको बढ़ाएंगे। Now we will check SG maximum size by running show parameter SG command. If it is less than 3000 MB, then we have to increase it. Now we have to shut down database by running shut immediate command. अब हम database को बंद करेंगे shut immediate की command चला के। Now we will start database by running startup command. अब हम database को start करेंगे startup की command चला के। Now we will check SG maximum size again in order to make sure the changes we did as reflected or not. अब हम दोबारा SG maximum size पता करेंगे ताकि तसल्ली कर लें कि जो तब्दीली हमने की है वो हो चुकी है या नहीं। तो जो तब्दीली हमने की है वो हो चुकी है। The changes we did as reflected. Now we will install Apex by running this command. अब हम Apex को इंस्टॉल करेंगे ये कमांड चला के। Oracle Apex 21.1 has installed. Oracle Apex 21.1 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। Now we will run this command. अब हम ये कमांड चलाएंगे। User will be admin, provide email and password from your choice. User जो है वो admin रहेगा। ईमेल और पासवर्ड आप अपनी मर्जी से दे दें। Now we will run this command. अब हम ये कमांड चलाएंगे। Provide password for Apex listener and Apex REST public user, which will be Oracle in lowercase. पासवर्ड देंगे Apex listener और Apex REST public user को जो कि Oracle होगा छोटे हर्फों में। Now we will run this command. अब हम ये कमांड चलाएंगे। Exit this command prompt, इस command prompt को बंद कर दें। Open new command prompt with administrator rights. नया command prompt खोलेंगे administrator के राइट से। वहां जाएंगे जहां ORDS का फोल्डर अवेलेबल है and reach where ORDS folder is available and when we reach there run this command. जब हम वहां पे पहुंच जाएंगे तो फिर ये कमांड चलाएंगे। Now we will provide a configuration path where we want to configure ORDS. अब हम configuration का पता देंगे जहाँ पे हम ORDS को configure करना चाहते हैं। Enter. If your port is 1521 then hit enter button. If your port is different then define your port and hit enter button. अगर आपकी पोर्ट 1521 है तो आप एंटर का बटन दबा दें। अगर आपकी पोर्ट मुख्तलिफ है तो फिर आप अपनी पोर्ट लिखें और फिर एंटर का बटन दबाएं। ऑप्शन विल बी 2, ऑप्शन जो है वो 2 रहेगा। प्रोवाइड योर सेट, अपने सेट बता दें। एंटर। Provide password and confirm password for ORDS public user, which will be Oracle in lowercase. Password
पासवर्ड देंगे, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देंगे ORDS पब्लिक यूजर को, जो कि ऑरिकल रहेगा छोटे हरफों में। To find your port, come to Oracle Aura DB18 Home 1 Expanded। अपनी पोर्ट पता करने के लिए Oracle Aura DB18 Home 1 में आए, इसको खोलें। Come to Net Manager, open Net Manager पे आए, इसको खोल लें। Administrator username will be sys, Administrator username sys रहेगा। Provide password and confirm password, पासवर्ड और confirm password दे दें। Enter, 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 enter. Provide password and confirm password for Apex public user, which will be Oracle in lowercase। पासवर्ड और confirm password देंगे Apex public user को, जो कि Oracle होगा छोटे हरफों में। Enter. Provide password and confirm password for Apex listener and Apex REST public user, which will be Oracle in lowercase। पासवर्ड और confirm password देंगे Apex listener और Apex REST public user को, जो कि Oracle होगा छोटे हरफों में। Enter. Copy images folder from the Apex installation folder। कॉपी करेंगे images के फोल्डर को Apex के इंस्टॉलेशन फोल्डर में से और उसको चस्पा करेंगे यहाँ and paste it to this path। Enter. Now provide a path till images folder to Apex static resource location। अब हम Apex static resource location को पता देंगे images के फोल्डर तक का। Enter. Provide port from your choice or leave it as it is। पोर्ट दे दीजिए अपनी मर्जी से, ये इसको ऐसे ही रहने दें। When Oracle REST data services initialize up here, we can access Oracle Apex 21.1। जब Oracle REST data services initialize लिखा हुआ आ जाएगा तो हम Oracle Apex 21.1 को इस्तेमाल कर सकेंगे। Do not close this command prompt because if it closed for any reason, we cannot access Oracle Apex 21.1। However, we can reopen it as well। इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद मत करिएगा, क्योंकि अगर ये किसी भी वजह से बंद हो जाएगा तो हम Oracle Apex 21.1 को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता हम इसको दोबारा खोल सकते हैं। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स। कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से, वहां जाएंगे जहां ORDS का फोल्डर मौजूद है एंड रीच वेयर ORDS फोल्डर इज अवेलेबल एंड व्हेन वी रीच रन दिस कमांड। और जब हम वहां पे पहुंच जाएंगे तो फिर हम ये कमांड चलाएंगे। Oracle Apex 21.1 and ORDS 21.4 with database 18C has installed in Windows 10। Oracle Apex 21.1 और ORDS 21.4 database 18C के साथ Windows 10 में इंस्टॉल हो चुका है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।